Hello, good morning or good afternoon perhaps. This is day 2. This is the 2nd of July and it's about 1 o'clock. 1 बज गए हैं यहाँ पे दोपहर के. I slept बहुत ज़्यादा टाइम कल, almost good 11 to 12 hours because I needed that. 2 दिन से मैं सोया नहीं था. We are in Helsingborg, which is around 2 hours from Denmark. Denmark's capital Copenhagen. स्वीडन का जो कैपिटल है स्टॉकहोम, दिस इज़ क्वाइट फार फ्रॉम हियर. सो बेसिकली डेनमार्क का जो कैपिटल है दैट इज़ मच मोर क्लोजर टू स्वीडन का कैपिटल. वी टुक द मेट्रो एंड इट वाज वेरी फैसिनेटिंग कि इट कनेक्ट्स टू कंट्रीज डेनमार्क एंड स्वीडन वाया अ ब्रिज काइंड ऑफ सिस्टम. इफ़ यू सी द मैप, Denmark is on the other side, there is water here and there is Sweden up here. So यहाँ डेनमार्क से स्वीडन पे आने के लिए देयर इज़ अ मेट्रो कनेक्टिंग थ्रू द ब्रिज लाइन वाया वाटर एंड इट वाज नाइस, वेरी नाइस. दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि मैं 2 कंट्रीज़ के बीच में मेट्रो से ट्रैवल कर रहा था और पॉसिबली ट्रेन से. एंड टुडे इज़ अ वेरी कोजी डे. आज बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना है, लाइट ही रख रहा है बिकॉज अमृता दीदी माई मासी सेड कि लाइक फर्स्ट कपल ऑफ डेज थोड़ा आराम से कर क्योंकि टेम्परेचर बहुत लोगों को सूट नहीं होता है इमीडिएटली आके. तो वील गो टू द मॉल और प्रॉब्ली बाय थोड़ा ग्रोसरी यहाँ पे बाहर जाके. एंड वंस वी आर डन विद दैट, मोस्टली आज का माहौल थोड़ा क्लाउडी है, सनीश लग रहा है, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं है. तो वील सी क्या करना है आगे. दिस इज़ द हाउस टूर. आई डिडंट गिव यू द हाउस टूर. Okay, so this is the living room basically. Wait, I'll give a better angle. This is the living room right here. This is Amrita Didi's work desk. She's in IT, software engineer. This is the outskirts.
This right here is a school. It's very interesting and a very unique shape for a school. This right here is a huge grocery slash everyday item store named Maxi, something like Walmart. I thought Maxi was just in North America, but इधर भी है. So we'll go there थोड़ा time में. About 5 kilometers done. मज़ा आ गया. I walked around 1.5 kilometers और बाकी का जितना था I did have a run. The park is amazing here. इतना बड़ा park है यहाँ पे ना. It's like it connects 2 to 3 different localities altogether. Sectors के अंदर जैसे हमारे यहाँ पे 3 localities हैं. So तीनों locality के बीच में एक common park है. There's a common swimming pool here, common calisthenic gymnasium area and this common park, and also a few kids facilities. इसे park रहता है. We are back at the building. Let's do some stretching और फिर घर चलते हैं. बहुत ज़्यादा. इतना विंडी है कि हम लोग ट्राइपॉड एक जगह पे सेट करके एक वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे. अभी कहाँ जा रहे हैं हम लोग? अभी हम लोग जा रहे हैं सेंट्रल.
Helsingborg Central. गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज है डे 4। इट्स अराउंड 7:15 ईयर और हम लोग यहाँ से ट्रेन लेके निकल पड़े हैं स्टॉकहोम। वी आर गोइंग फ्रॉम हेल्सिंगबर्ग टू अ स्मॉलर सिटी या फिर टाउन नेम्ड लुंड। फिर वहाँ से ट्रेन लेके हम लोग जाएंगे स्टॉकहोम, विच विल टेक अराउंड 4 आवर्स। जैसे आप लोग देख सकते हो, ट्रेन तो पूरी खाली है एक तरह से, बिकॉज दिस इज़ अ लोकल मेट्रो काइंड ऑफ थिंग जो इंटर सिटी इंटर टाउन भी बहुत कनेक्ट करती है। Reach the station of Lund. It was a 30-minute ride जहाँ से हमने स्टार्ट किया था हेल्सिंगबर्ग से। मॉर्निंग दोस्तों, वी आर इन स्टॉकहोम। इट्स डे 2 इन स्टॉकहोम। टुडे इज़ डे 5th of July। का प्लान है कि आज हम स्टॉकहोम सिटी एक्सप्लोर करेंगे। फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टॉकहोम सेंट्रल। यहाँ यूरोप में डाउनटाउन को बेसिकली, एटलीस्ट स्वीडन में, आई डोंट नो अबाउट यूरोप, बाकी कंट्रीज़ एक्सप्लोर करेंगे तब समझ में आएगा, बट स्वीडन में डाउनटाउन को सेंट्रल कहते हैं। सो वी आर गोइंग टू द डाउनटाउन और स्टॉकहोम सेंट्रल। ट्रेन लेके अभी मेट्रो, फिर वहाँ से वील गो
to the to two museums basically आज, because आज बहुत बारिश का माहौल हुआ है तो थोड़ा इंडोर्स ही ज़्यादा जा रहा है. सो वी आर गोइंग टू द नेशनल म्यूजियम हियर इन स्वीडन, बट उससे पहले हम जा रहे हैं टू द नोबल म्यूजियम. आज दिन भर म्यूजियम ही जा रहे हैं बेसिकली हम, बट अगर थोड़ा सनी हुआ और हम लोग स्टॉकहोम सेंट्रल के पास है तो वहाँ पे भी थोड़ा एक्सप्लोर करेगा. At the National Museum, located on Waterholm to the left, many of the world's great... Okay, we are finally here at the National Museum. एक घंटा घूमते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है, बिकॉज इट क्लोजेस एट 5 और अभी 4 o'clock हो रहा है. Good morning guys, today is the 6th of July. As you can see, हम इस वाले घर में रुके हैं and this is the neighborhood. ये रो हाउसेस है और ये विलाज आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं. अब हम जा रहे हैं स्टॉकहोम फिर से एंड देखते हैं आज स्टॉकहोम में घूमेंगे. कल we did the Nobel Prize Museum, National Museum, the boat ride in Stockholm. आज we are planning on different things. Let's go. कहाँ पे जा रहे हैं आज? अभी H&M, उसके बाद वाजा, उसके बाद सिटी हॉल, उसके बाद देखेंगे. ठीक है? ओके.
Okay, so I just watched a 20-minute documentary about the ship. I'll just give a brief historical record. क्या है इस ship का नाम है the Vasa. It was made in the year 1628. It was made by the then king of Sweden named Adolphus. इस शिप के बारे में एक ट्रेजेडी ऐसे कहते हैं कि इसके मेडन वोयाज मतलब फ़र्स्ट टाइम इसे जब स्टॉकहोम के वाटर्स में उतारा था तब फर्स्ट 1000 मीटर्स के अंदर ही इट स्टार्टेड टिल्टिंग ऑन लेफ्ट एंड राइट साइड ड्यू टू अ गस्ट ऑफ विंड. इतनी ज़ोरों से हवा चल रही थी कि इट स्टार्टेड टिल्टिंग लेफ्ट एंड राइट एंड फर्स्ट 1000 मीटर्स में इट स्टार्टेड सिंकिंग. एंड जैसे अभी हमने म्यूज़ियम में आगे की तरफ देखा यहाँ पे अवशेष रखे हुए हैं लोगों के. Around 30 people died in this tragedy and the ship was to not be found for more than 333 years after it sank. So basically 19th and 20th century में ही finally Swedish archaeologists and historians ने historical records के through इस शिप को ढूंढना शुरू किया and it took around 50 years to be found in the waters of Stockholm. फिर उसी फिल्म में आगे बताया गया था कि हाउ इट टुक अराउंड 20 एंटायर ईयर्स फ्रॉम 1980s टू अबाउट 2000. कैसे 20 साल लगे बहुत सारे स्वीडिश नॉर्वे के लोगों को एंड स्पेशली जापानीज़ लोगों को, जापानीज़ आर्कियोलॉजिस्ट, मरीन स्पेशलिस्ट, बायोलॉजिस्ट, मरीन आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस इस शिप को रीबिल्ड करने में एंड रिस्टोर करने में. इट वॉज़ अ गुड डॉक्यूमेंट्री एंड इससे समझ में आता है कि नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क एंड फिनलैंड में एक तरह से कह सकते हैं कितना महत्व दिया जाता है, कितना इम्पोर्टेंस दिया जाता है टुवर्ड्स शिप्स. बिकॉज एज वी नो स्टॉकहोम, कल जैसे हम फर्स्ट डे टूर ले रहे थे तो हमें समझ में आया कि स्टॉकहोम इज़ कम्प्राइज्ड ऑफ अबाउट 14 आइलैंड्स और इन 14 आइलैंड्स को एक साथ में कनेक्ट करके सिटी को बनाया गया है. दैट्स वाई शिप्स and marine travel is very important here. We are done with the Vasa museum. अब हम यहाँ पे दूसरा म्यूज़ियम देखने जा रहे हैं which is either the Viking museum or the Nordic museum. दिक्कत ये हो गई है कि संडे को यहाँ पे जल्दी सब बंद हो जाता है due to working hours. So the Viking museum might be closing early around 4 PM और अभी 3:45 हो रहा है. So we are going to the Nordic museum. I know Papa will be sad because of this because he wanted me to see the Viking Museum. He is a huge fan of the show Viking, Valhalla on Netflix, but we can't. Guys, this is the viral machine. जो भी म्यूज़िक में है उनको पता होगा. Phineas recorded this is in Australia and the song Bad Guy by Billie Eilish. उसमें जो टक 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 वाला है सैम्पल इसमें से ही लिया है. Tryck på dörrknappen när den lyser grönt. Hello guys, today is day 7. फिर स्टॉकहोम स्टेशन पे फिर से सॉरी कल ब्लॉग खत्म हो मैंने लगा आज सुबह भी बहुत शूटिंग हुई. वी वर पैकिंग लीविंग फ्रॉम आर्यन्स प्लेस. सो अब हम स्टॉकहोम में अबाउट 30 to 40 मिनट्स में हमारी ट्रेन
we'll go back to Leeds, फिर वहाँ से we'll come back to Helsingborg. वहाँ पहुँचते almost 10 o'clock हो जाएगा रात को, because even past that 11 o'clock भी हो सकते हैं. So once we're done with that, आज का पूरा दिन traveling में जा रहा है. So we are done majorly with the first 7 days of the vlog. So first vlog gets done here. Second or third vlog. Catch you in that.